Welcome to the second chapter of 10th Maharashtra State Board Geography. The chapter name is Location and Extent. So in this chapter we will study what is the location of Brazil and what is the location of India in the world. So before that, let us see how is the location and location determined in the world. So you are seeing in this photograph we are having imaginary lines. The vertical imaginary lines are called as longitudes or meridians, and horizontal lines are called as latitudes. So the world is divided into 360 longitudes, 360 longitude lines है और 180 latitude lines है. ये जो 0 degree latitude है, that is called as equator. So above equator we are having 90 degrees and below equator we are having 90 degrees. So above equator we are having 90 degrees north and below equator we are having 90 degrees south. So as we have divided into two parts, so vertically भी हम दो parts में divide कर सकते हैं. So this is the red line. The red line is prime meridian. This is the 0 degree meridian. In total we are having 360 degrees. So 0 degree, and here or in the western side we are having 180 degrees and in the eastern side we are having 180 degrees. So total is 360 degrees. So suppose the region is located here. So we will say that region is located in the eastern hemisphere, and suppose the region is located here, so we will call that region is located in the western hemisphere. So अगर हम sphere को divide करते हैं, so this becomes the western hemisphere, this becomes the eastern hemisphere. And if you see the horizontal division, so this becomes the upper part becomes the northern hemisphere and this becomes the southern hemisphere. So if you see this continent, this is the South America. Here Brazil is located. So Brazil is located in the most of the Brazil is located in the southern hemisphere and western hemisphere, and little part of Brazil is also located in the northern hemisphere and western hemisphere. So this is how the location is determined. Let us see how is the extent determined. See, अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि यहाँ कौन सा एरिया है, यहाँ मुझे एरिया का लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा? जहाँ लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड मीट करता है तो वहाँ इस एरिया का लोकेशन होगा. सो लैटिट्यूड का एग्जैक्ट लोकेशन पता है या 0 डिग्री इक्वेटर, और इस लॉन्जिट्यूड का एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो मैं इस लोकेशन का सीधा इस जगह का लोकेशन बता सकता हूँ, डिग्रीज में और मिनट्स में लोकेशन बता सकता हूँ. सो दिस इज हाउ लोकेशन इज डिटरमाइंड. सपोज मुझे पूरे कंट्री का लोकेशन डिटरमाइन करना है, पूरे कंट्री कहाँ लोकेटेड है ये डिटरमाइन करना है, तो मैं कंट्री के एक्सट्रीम पॉइंट्स का यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ का लोकेशन फाइंड आउट करूँगा और यहाँ का लोकेशन फाइंड आउट करूँगा, यहाँ का लोकेशन फाइंड आउट करूँगा और यहाँ का लोकेशन फाइंड आउट करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि कंट्री कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्जिट्यूड्स में है. So like this we can find the location of any area or any country. So if you see this Indian map, so here we are having various degrees like 70 degree, 74 degree, 78 degree, 82 degree, 86 degree, 90 degrees. This is the longitudes and these are the latitudes. So अगर हम बड़े मैप में देखें तो India is located here. So this is 0 degree, this is 0 degree longitude. Here we are having 180 degree longitudes, and here we are having 180 degree longitudes. Here we are having equator. So India is above the equator, so it will be in the northern hemisphere, and it is here, it is in the western side, eastern side of this. So it is in the eastern hemisphere. ये eastern hemisphere में आता है, ये western hemisphere में आता है. इक्वेटर के ऊपर northern hemisphere, इक्वेटर के नीचे southern hemisphere. So India is located in the eastern एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड हम देखेंगे तो ये यहाँ से होगा, ये जो 60 डिग्रीज दिख रहा है इसके और 140 डिग्रीज के बीच में. सो उसके बीच में हम लोग जब भी एग्जैक्ट लोकेशन निकालते हैं तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा यहाँ से, गुजरात का जो टिप है जहाँ से इंडिया का लोकेशन स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. फ्रॉम हियर टू हियर. सो ये जो पॉइंट्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है दैट आर लैटिट्यूड्स एंड जो वर्टिकल लाइन्स है दैट आर लॉन्जिट्यूड्स. सो इंडियाज एक्सटेंट इज फ्रॉम 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स. अगर एक लैटिट्यूड का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रहा है तो उस लैटिट्यूड के बाद अगर हम 1 मिनट आगे जा रहे हैं तो उसका लोकेशन देखेंगे. सो इंडिया का जो 8 डिग्री नॉर्थ है, 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, उसके आगे हम लोग अगर 4 डिग्री जाएंगे तो वहां से इंडिया स्टार्ट होता है. सो इंडियाज लोकेशन इज फ्रॉम 8 degree 4 minute north to 37 degrees
एंड 6 मिनट्स नॉर्थ. तो यहाँ तक इंडिया का लैटिट्यूडनल लोकेशन है. लॉन्जिट्यूड लोकेशन इज फ्रॉम 68 डिग्रीज एंड 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड. ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है. So like that we can also determine what is the latitudinal and longitudinal extent of Brazil. See, this is the Indian tricolor or Indian flag. This is the Indian national flag and this is the Brazilian national flag. So in this book we will compare between Brazil and India. So let us compare between the Brazil and India. The second largest populated country in the world. So India is second largest populated country in the world after China. China is first. Then known for samba dance. Brazil is known for samba dance. And famous for spices in the world. So India is very much famous for spices. या हम मसाला बोलते हैं उसे. So spices के लिए बहुत famous है. It is known for coffee pot of the world. So coffee Brazil का famous है. Then cricket is the popular sport here, and here we are having popular sport as football. So this is the comparison, basic comparison between India and Brazil. So now we will see what is the name of the country. So India is called as Republic of India. Republic का meaning होता है जिस country का head, जिस कंट्री का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में जो आदमी होता है वो इलेक्टेड होता है. सो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है दैट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक. सिमिलरली ब्राजील इज ऑल्सो अ रिपब्लिक. इफ यू टेक केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड और ब्रिटेन, वहां का जो हेड है क्वीन इलेक्टेड नहीं है. सो ब्रिटेन को हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते. इट इज अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट अ रिपब्लिक. So name of the capital is New Delhi. India's capital is New Delhi. And location, extent and boundaries of India. So India is sharing boundaries with Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar and other countries. So India is located in the northern and eastern hemisphere of earth. So we have seen India is located in the northern and eastern hemisphere of the earth. It is located in the southern part of Asian continent. Asia continent है उसके southern part में India है. So mainland India. Now we will talk about mainland India, main part of India. We will not talk about the islands, Andaman, Nicobar and Lakshadweep Island. We will only talk about the mainland India. So mainland India is located between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minutes north latitude. We have seen how it is located in the north latitude. Now and between 68 degrees 7 minutes east to 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड. तो यहाँ से 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ. और यहाँ हम बात करेंगे तो 68 डिग्रीज. सो हियर इट इज 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज. सो आफ्टर 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड. तो यहाँ तक यहाँ इंडिया का लोकेशन है. वर्ल्ड में अगर इंडिया का हम लोकेशन फाइंड करेंगे तो ऐसे ही लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा. सो इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. इट इज लोकेटेड इन 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. सो हियर इज इंदिरा पॉइंट. ये जो लास्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड का, दैट इज इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट आज नहीं है क्योंकि जब भी सुनामी आया था तो सुनामी के अंदर इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया. सो इट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. लेकिन ये मेनलैंड इंडिया का टिप नहीं है, ये आइलैंड्स का टिप है. सबसे लास्ट एक्सटेंट है इंडिया का. सो देयर आर वेरियस कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार that are neighbors of India. Also we are having Arabian Sea to the west, Bay of Bengal to the east. We are having Indian Ocean to the south. Also Sri Lanka is to the south of India. These are the different neighbors of India and different land bodies and water bodies that are found near India. So now we will talk about Brazil. So name the country. The name of the country is Federative Republic of Brazil. So federative means Brazil के अंदर बहुत सारे states है. सब states को मिलके country बनाया. So that is federation or federative. Republic. So again Brazil का जो head है that is elected by the people. So it is called as Republic. So Federative Republic of Brazil. Similarity between India and Brazil are both of them are republic. Name of the capital is Brasilia. Location, extent and boundaries. So let us see what are the location and extent of and Brazil and boundaries of Brazil. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of them lies in the southern hemisphere. We have seen इक्वेटर ब्राजील के ऊपर से पास होता है. इक्वेटर के ऊपर जो भी जगह है that becomes northern part and equator के नीचे जो जगह है that becomes southern part. So if you see the map of Brazil, so this is the equator. So equator के ऊपर भी थोड़ा ब्राजील का पार्ट है, equator के नीचे भी थोड़ा ब्राजील का पार्ट है. So it lies in the northern hemisphere also and it lies in the southern hemisphere also.
but entirely it is located in the western hemisphere. So this is the rough idea of location. What is the exact latitudinal and longitudinal extent of Brazil? So if you see the latitudinal extent of Brazil, so it is between 5 degrees 15 minutes north to 33 degrees 45 minutes south latitude, and between 34 degrees 45 minutes west to 73 degrees 48 minutes west longitude. So ये ब्राज़ील का latitudinal longitudinal extent है. So the Brazil's neighboring countries and oceans. So we are having neighboring countries. So the north we are having Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname, French Guiana. These are the countries to the north. To the west we are having Peru, Bolivia, then Paraguay, Argentina. These are the countries. Then here we are having South Atlantic Ocean. So these are the, and we are having North Atlantic Ocean. So these are the neighboring countries and oceans to the north, south, west, east, west of Brazil. So in the south we are having Uruguay, Argentina. These are the countries that are neighboring to Brazil. So these are the neighbors of Brazil. So capital of Brazil is here, Brasilia, and we are having boundaries, international boundaries and state boundaries. So historical background of India and Brazil. Let us see what is the historical background of India and what is the historical background of Brazil. See, both the countries were under the control of foreign countries. India British के control में था, Brazil Portugal के control में था. So let us see India first. India was under the British rule for almost 1.5 century. So 150 years तक India British के control में था. India got independence in the year 1947 despite facing several problems after 3 wars, famine situation in various parts of and similar issues after independence. India is major developing country in the world. So we have seen last year India has fought 3 wars. 1965 का war हुआ, 1962 का war हुआ, again 1971 में war हुआ. There was famine situation in India, जब भी खाने का बहुत कमी था. But still we are in developing countries. Still we are most developing countries in the world. India is considered as a global market too. ग्लोबल मार्केट, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो वर्ल्ड के सभी चीज़ें अभी इंडिया में मिलती है. सो इंडिया इज अ ग्लोबल मार्केट. इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ग्लोबल मार्केट टू बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप. सो वी हैव सीन आफ्टर 1991 इंडिया में लिबरलाइजेशन हो गया, हमारा मार्केट ओपन हो गया. So more and more people started investing in India. As more and more people started investing, now we are getting goods that are made in different parts of the world. हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे कंप्यूटर्स या कुछ भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, that are imported from other countries. So India is like a global market. The proportion of youth in India's population is high. So youth या young population India के population में बहुत ज़्यादा है. If you see 35 to 40% या 50% people हमारे young है, young generation है. So because of this form, major part of the working population, ये जो young population है, that is working population, ये काम करने वाला population है. जो बच्चे होते हैं 15 years के नीचे जो लोग होते हैं और 65 years के ऊपर होते हैं, that is dependent population. ये working population के ऊपर depend है. So इंडिया का major population working population है. India is looked upon as a young country. Then historical background of Brazil. See, for more than 3 centuries, Brazil was under Portuguese rule. इंडिया जैसे 150 years के लिए ब्रिटिश के कंट्रोल में था. Brazil was for 3 centuries or 300 years under the rule of Portuguese. Brazil gained its independence in 1882. From 1930 to 1985, Brazil was having military rule. For more than half century, it was under populist military government. वहाँ military का rule था. It has overcome global financial difficulties in late 20th century. Brazil is seen as the contributor of economic growth, world and important market in the future. So Brazil is also a developing country. It is part of BRICS. So it is part of BRICS and it is a developing country. So now as India has become the world market, Brazil is also becoming world market. As more and more people are becoming richer and they are getting money and they are getting jobs in Brazil. So in future Brazil will become an international market or global market. So this is the this is the world map. Here we are having India and here we are having Brazil. So India से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और ब्राजील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है. इन मिडिल वी आर हैविंग इक्वेटर. यहाँ इक्वेटर है. सो इक्वेटर भी ब्राजील से पास होता है. See, we have celebrated our independence on 15th August, whereas Brazil celebrated our independence on September 7. So India got independence on 15th August 1947. So 15th August is celebrated as Independence Day. In Brazil, September 7th is celebrated as Independence Day. India has federal parliamentary republic type of government. Federal parliamentary republic means हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट भी है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है. ऐसा जहाँ
जहां ऐसा डिवीजन होता है पावर का, सो दैट बिकम्स अ फेडरल कंट्री। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक मीन्स हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनते हैं, और लेजिस्लेचर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा में से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। बट इन केस ऑफ ब्राजील दे आर हैविंग प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, वहां प्रेसिडेंट अलग होता है और लोकसभा राज्यसभा वो सब अलग होता है। सो इन केस ऑफ अमेरिका ऑल्सो वी आर हैविंग प्रेसिडेंट एज डिफरेंट एंड लोकसभा और लेजिस्लेचर एज डिफरेंट। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट है उसमें से ही प्रेसिडेंट, उसमें से ही प्राइम मिनिस्टर आता है। तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर होता है। बट इन केस ऑफ ब्राजील दैट इज नॉट द सिचुएशन। ब्राजील में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, सो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम पियो ब्राजील और द लोकल वुडन ट्री। सो वुडन ट्री वहाँ का जो लोकल वुडन ट्री है, और पाओ ब्राजील वहाँ से ब्राजील का नाम आया है।